Very good morning, students. I hope you all are doing great in your studies and revised your previous chapter. Today, we are going to start a chapter 7, which is internet connection and emailing. So, in this chapter, we will be going to learn about internet connection and our email services. So, without wasting any further time, let's start it. Now, the name of our chapter is internet connection and emailing, and the topics which we will discuss here are types of internet connection, email, composing and sending emails. Now we have an activity which says most of you must have seen online shopping website advertisements on your television, and can you name any four such type of websites in the given space? तो जो हमारी online shopping websites हो सकती हैं, they can be Amazon, eBay, Flipkart, and the last one can be Myntra. So we have already learned about internet and its various terms related to it. In this chapter, we will learn about the types of internet connection and email, that is most popular source of communication on the internet. So जो term है internet उसको derive किया गया है from the word inter and net, जिसका मतलब होता है between the networks. ये actually connect करता है various smaller and larger networks of computers across the world to share information among its users. तो टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन कौन कौन से होते हैं? वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन जो एग्जिस्ट करते हैं, एनेबल करते हैं हमें कि हम इंटरनेट के साथ में कनेक्ट हुए. फर्स्ट वन इज डायल अप कनेक्शन. तो जो डायल अप कनेक्शन है ये लीस्ट एक्सपेंसिव वे होता है टू एक्सेस द इंटरनेट, बट ये ऑल्सो स्लोएस्ट कनेक्शन भी होता है. डायल अप कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन टू और मोर कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज करते हैं कोई पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क विच इज पीएसटीएन टू कनेक्ट टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. नाउ टू मेक डायल अप कनेक्शन, जो मॉडेम है वो कनेक्टेड होना चाहिए हमारे एक्टिव फोन लाइन से, दैट इज नॉट इन यूज. नाउ व्हेन कनेक्टिंग द मॉडेम विल पिक अप द फोन एंड डायल अ नंबर दैट इज अटैच्ड टू अनदर कंप्यूटर. नाउ आफ्टर द कनेक्शन इज मेड, जो कंप्यूटर है वो चेक करेगा ईमेल, ब्राउज करेगा इंटरनेट एंड शेयर कर सकता है फाइल्स. नेक्स्ट आता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन. ये जो टर्म है ब्रॉडबैंड, ये रेफर करती है एक इंटरनेट कनेक्शन को जो हमें ऑफर करता है एक हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एंड हाई डेटा ट्रांसफर रेट. इन ब्रॉडबैंड कनेक्शन द कंप्यूटर रिमेन्स कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड. हमारा कंप्यूटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड रहता है किसके साथ? टू द इंटरनेट थ्रू एन एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन. ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो ऑफन रेफर होती हैं टू एज ऑलवेज ऑन service because it is not necessary to make a setup call to our ISP each time when we wish to access the internet. नेक्स्ट होता है DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. ये एक ऐसा इंटरनेट सर्विस है जो हमारे कनेक्शन को क्रिएट करता है बाय यूटिलाइजिंग अनयूज्ड टेलीफोन वायर्स दैट कॉज नो इंटरप्शन टू आवर टेलीफोन सर्विस. यहाँ पे जो स्पीड वी एक्सपीरियंस विद DSL कनेक्शन वेरीज विद आवर डिस्टेंस फ्रॉम द स्विचिंग स्टेशन. केबल ब्रॉडबैंड केबल कनेक्शन प्रोवाइडेड बाय लोकल केबल टीवी प्रोवाइडर. यहाँ पे जो केबल इंटरनेट कनेक्शन स्पीड होती है वो वेरी करती है नंबर ऑफ यूजर्स ऑन द सरफेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे. नाउ गिवन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, यूजर्स ऑफ द ब्रॉडबैंड केबल सर्विस शेयर करते हैं कनेक्शन बैंडविड्थ बट विच शोज द स्पीड द मोर यूजर्स आर ऑन द सिस्टम. फिर आता है सैटेलाइट. ये लास्ट और स्लोएस्ट ब्रॉडबैंड सर्विस होता है provided by satellite. Although this is good replacement of dial-up for those people living in remote rural areas. यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो क्वाइट हाई होती है, बट ऑनगोइंग मंथली चार्जेस जो होते हैं वो कंपेटिटिव होते हैं टू बोथ केबल एंड DSL इज लो. नाउ ये रिक्वायर करते हैं सैटेलाइट डिश इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू द सैटेलाइट. नाउ वी हैव वायरलेस कनेक्शन. वायरलेस या फिर वाईफाई, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हमें कोई भी टेलीफोन लाइन या केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. मेन एडवांटेज जो है वायरलेस इंटरनेट की वो है मोबिलिटी, दैट इट डज नॉट टाई अस टू अ पर्टिकुलर लोकेशन. व्हेन लैपटॉप, स्मार्टफोन्स या फिर टैबलेट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वाईफाई हॉटस्पॉट इन पब्लिक प्लेसेस, द कनेक्शन टू अ वायरलेस नेटवर्क इज established. नाउ व्हाट इज ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल मोस्ट पॉपुलर सर्विस है ऑफ इंटरनेट. ईमेल एनेबल करता है हमें कि हम इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज कर सकते हैं अपने मैसेजेस को विद अदर इंटरनेट यूजर्स wherever they may be. Now today almost anyone who has internet access also has access to email. So theoretically जब भी हम communicate करते हैं with any internet user in the world, the versatility has made email one of the most popular internet services. To use an email services हमें एक email program
चाहिए जो अलाउ करता है हमें टू क्रिएट एंड यूज ईमेल अकाउंट. नाउ सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट बेस्ड फ्री ईमेल्स programs are Gmail, Rediff Mail, and Yahoo Mail. Gmail was developed by Paul Bichette and Andrew Warner in August 2001. ईमेल एड्रेस एक कॉम्बिनेशन होता है यूजर नेम का और डोमेन नेम का, जो आइडेंटिफाई करता है यूजर को सो दैट ही शी कैन रिसीव मैसेजेस. तो जो यूजर नेम और डोमेन नेम है इनको सेपरेट किया जाता है बाय @सिंबल, जिसका मतलब होता है @. तो डोमेन नेम को सेपरेट करते हैं हम इनटू टू पार्ट्स बाय अ पीरियड, एंड दिस फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर जैसे याहू, जीमेल, मेनी मोर. एंड जो सेकंड पार्ट होता है वो डिपिक्ट करता है टाइप ऑफ वेबसाइट जैसे .com मतलब कमर्शियल, जीओवी मतलब गवर्नमेंट, एंड मेनी मोर. तो ये हमारा एक ईमेल एड्रेस है जैसे राजन @gmail.com. तो राजन हमारा यूजर नेम हो गया, से हमने सेपरेट कर दिया, एंड gmail.com हमारा डोमेन नेम हो गया. ईमेल एड्रेस कैन नॉट यूज कॉमा, स्पेसेस या फिर ब्रैकेट्स. तो कैसे हम अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? तो हम स्टार्ट करेंगे वेब ब्राउजर एंड एंटर करेंगे अपना वेब एड्रेस विच इज gmail.com इन द एड्रेस बार. नाउ जीमेल का लॉगिन पेज अपीयर हो जाएगा हमारे स्क्रीन पे, वहां से हम क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे इन द लॉगिन पेज टू ओपन जीमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म. फर्स्टली हम अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे इन द फॉर्म और डिजायर्ड लॉगिन नेम. नाउ इफ समवन एल्स हैज टेकन द सेम लॉगिन नेम तो एक मैसेज आएगा दैट समवन ऑलरेडी हैज दिस यूजर नेम. तो आप दूसरा नेम ट्राई करोगे, अपनी चॉइसेस दोगे, कोई भी न्यू यूजर नेम सिलेक्ट करोगे. वंस आपने लॉगिन नेम डाल दिया उसके बाद में आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करोगे मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का, एंड रिपीट द सेम पासवर्ड इन द री एंटर पासवर्ड बॉक्स. नाउ आप फिल करोगे रेस्ट ऑफ द एंट्रीज इन द फॉर्म एज दे आर आस्क्ड, एंड फाइनली आप क्लिक कर दोगे आई एक्सेप्ट बटन पे या फिर कंटिन्यू टू जीमेल. नाउ इफ ऑल द एंट्रीज आर करेक्टली एडेड बाय you will get a confirmation from your new account and your new email addresses. आपका जो भी login name है वो @gmail.com. Composing and sending emails. Now once we have created an email account, हम compose भी कर सकते हैं और send कर सकते हैं अपने email को. कैसे? हमें अपना web browser open करना है, gmail.com हमें अपनी वेबसाइट खोलनी है. इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर विंडो साइन इन पेज अपीयर होगा, वहां से आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने क्रिएट करा था वो आप एंटर करके लॉग इन करोगे. फिर आप कंपोज बटन पे क्लिक करोगे लेफ्ट साइड पे ऑफ द ईमेल विंडो. नाउ एक न्यू मैसेज विंडो अपीयर हो जाएगी एट द बॉटम राइट साइड ऑफ द स्क्रीन. वहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप करोगे टू द रेसिपिएंट इन टू बॉक्स में आप उस रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस डालोगे जिसको आप भेज रहे हो. देन टाइप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज इन सब्जेक्ट बॉक्स. टाइप करना है मैसेज इन द मैसेज एरिया. फिर आप सेंड बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपका ईमेल जो है वो इमीडिएटली सेंड हो जाएगा टू द स्पेसिफाइड एड्रेस या फिर एड्रेसेस, एंड द मैसेज इज डिस्प्लेड इन्फॉर्मिंग दैट मेल हैज बीन सेंड. Now the copy here of the sent email is always saved in your sent folder listed on the left side of the window. That means आप कोई भी जो ईमेल भेज रहे हो तो वो आपके पास भी डिफॉल्ट सेटिंग में स्टोर रहती है. Let's revise the chapter. The term internet derived from the words inter and net, which means between the networks. Different way of getting connected to the internet are dial-up connection and broadband connection. Broadband connections are offered in 4 different forms: DSL, cable internet, satellite connection, and wireless connection. Now, email services help करती हैं to send and receive the mails electronically across the world. Let's do the exercise. First is tick the correct option. Domain name is separated into two parts by period. Which button is to be clicked to compose an email in Gmail? Compose. Which of the following connection is the least expensive way to access the internet? Dial up. Which of the following is not an email service provider? Right. Let's do fill in the blanks. Satellite requires dash in order to connect to a satellite. Satellite dish. An email address is a combination of dash and a dash. It is username and a domain name. The term internet derived from words inter and broadband services are often referred to as always on. Now, the dash connection is provided by the local cable TV provider. Let's do true false. Broadband connection
The computer remains continuously connected to the internet through an existing telephone line. True. Wi-Fi does not use telephone lines or cables to connect to the internet. True. Cable connection is used where broadband connection is not available. False. There are only one type of internet connection exists that enables us to connect to the internet. False. We do not need the receiver email address to send the email. False. So students, this was your complete chapter about internet connection and emailing. I hope it is clear to you. Do revise it once again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.